Assalamu alaikum, my dear girls and boys of class 5. How are you all? I hope all of you are doing well at your homes. Students, myself Fatima Zayed, and I'm here with another video lecture of social studies. Students, today is 11th June 2021 and it's Friday. Okay, students, as you know that in the physical classes we have revised our lesson number 5, which is culture and civilization of Pakistan. In today's video lecture we are going to revise the question answers of this lesson number 5. So let's begin. Well, students, there are 3 questions in this lesson. So first of all, question number 1 is, what do you understand by culture? मीन्स कल्चर से क्या मुराद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि व्हाट कल्चर है क्या. बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई वुड से कल्चर इज़ अ वर्ड फॉर द वे ऑफ लाइफ, फॉर द ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो हमारा रहन सहन का तरीका, द वे वी लिव, वी डू थिंग्स में तमाम हमारे ट्रेडिशंस आ जाते हैं. हम कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे रस्म व रिवाज, हमारा फूड, लिविंग स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द वर्ड कल्चर. So you have to write your own definition. What is culture? What do you understand by the term culture? Okay, I hope you got it. What is meant by culture? कल्चर बेसिकली हमारा रहन सहन का तरीका, इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं. हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारा फूड, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, हमारे रस्म व रिवाज, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द वर्ड कल्चर. Okay, now question number 2 is, which different cultures are found in Pakistan? कि पाकिस्तान में कौन कौन से डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि पाकिस्तानी कल्चर इज़ वेरी डाइवर्स, मतलब बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं. वी ऑल नो कि पूरी कंट्री में कोई एक कल्चर तो फॉलो नहीं किया जाता ना ही कोई एक लैंग्वेज बोली जाती है. वी ऑल नो कि नेशनल लैंग्वेज तो हमारी उर्दू है, लेकिन पूरी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड्स हैं, डिफरेंट हमारे ट्रेडिशंस, रस्म व रिवाज हैं, डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल है. सो क्या पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. सो कौन कौन से डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं? वी ऑल नो डिफरेंट कल्चर है. पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, बलोची कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स एंड फाउंड इन पाकिस्तान. Students, you have to write this question by your own. You can take help from internet or from a book. You have to write at least 5 different cultures found in a country, Pakistan. Okay. Well, the last and the third question is, write the benefits of different cultures. We all know कि पाकिस्तान में different cultures तो पाए जाते हैं. Now, what are the benefits of these different cultures? So, students, here I have written 2 just for example. The first one is to keep various ancient cultures alive. मतलब various अपने पुराने cultures को, traditions को ज़िंदा रखना. To familiarize people with multiple cultures. We all know students, just like हम तो हमारा तो पंजाबी कल्चर है. अगर हम लोग बात करें, सो जस्ट लाइक अगर हम सिंधी का मतलब सिंध कराची विज़िट करते हैं, या हम लोग किसी ऐसे किसी शख्स से मिलते हैं जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है, हमें उनके कल्चर्स के बारे में पता चलता है. सो वी गेट फेमिलराइज, हम फेमिलियर होते हैं. इनके फेमिलियर मीन्स हम वाकिफ़ होते हैं हम इनके कल्चर. जस्ट लाइक हम टीवी पर डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो हमें प्रोग्राम्स के थ्रू भी पता चलता है डिफरेंट प्रोविंसेस के कल्चर्स के बारे में. सो इट हेल्प्स अस टू familiarize with different multiple cultures. Okay, students, here I have written 2 benefits as an example. You have to write at least 5 benefits of different cultures. Okay, 4 to 5, it's up to you. Okay, well students, your diary is, you have to learn question answers of this lesson number 5. I hope you won't find any difficulty while doing these question answers. Well students, that's all about today's lecture. Now see you in the next lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.